Well, this is what we're getting you now. Shameful, inhuman and absolutely insensitive. A 14-year-old is raped and burnt alive. But despite her testimony, police trivializes her pain and dismisses her rape as a minor case of harassment. Now, what's even more shocking in this case is that the police has still not registered a case of rape or even an attempt to murder. Let's first listen in to the testimony of the victim herself. किसने किया है? उसने दौरान बीपी सिंह ने। हाँ सर। और उसके बाद जलाया किसने तुमको? उसने मेरे पे हरी कैसेट के फेंक दी। उसी ने तुमको जलाया? हाँ सर। ठीक है। तुम अभी पिछले साल 6ठी क्लास में थी? हाँ सर। है ना? मेरे को बोले मैं लेटरिन जाने गई थी तो मंदसौर में हाथ पकड़ी नुकड़ा बह गया। सर मैं इज्जत लेने की कोशिश की मैंने और बलात्कार की तो सर मैंने और हरी के सीटिंग फेंकी थी। ठीक है। क्या नाम है लड़के का? पीपी। ठीक है। गाँव का ही है? साकरिया। साकरिया का ही है। ठीक है। उसके बाद उसने तुम्ही को जलाया उसी नहीं है? हाँ सर। ठीक है। उसे सजा दिलाना चाहते हो तुम अभी? हाँ सर। मैं डिप्पी पे खेत के वहाँ खड़ा था, उन लड़की से मिलने के लिए गया था। तो हम दोनों खड़े थे, बात कर रहे थे और राधे श्याम उसने उसके भाई को बुला लिया वहाँ पे और वो मारने के लिए आया था, तो मैं भाग गया वहाँ से। क्यों मिल रहा था तुम लड़की से? तो दोस्ती थी हमारी उससे। कितने साल से? लगभग 2-2.5 साल से। अच्छा, तो जलाया तुमने उसको? नहीं। ये किसने जलाया? वो क्या, मैं तो भाग गया था वहाँ से। हाँ। मेरे को पता नहीं क्या हुआ। तो उसके क्या घर वालों ने जलाया उसको? सर मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को कुछ पता ही नहीं। तुमने नहीं जलाया उसको? लड़की बोल रही है कि तुमने जलाया उसको? नहीं सर, नहीं मैंने नहीं जलाया। क्या शारीरिक संबंध बना रहे थे? क्या कर रहे थे उसके साथ तुम? आप सब दोस्ती थी हमारी उसके साथ। Mamta Sharma of the NCW now on the phone line with us. Ma'am, we're talking about an appalling case here. Just give us a sense of what will be done to ensure that in the first place at least a case gets registered. देखिए, मैं देख रही हूँ लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के एपिसोड हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि पुलिस बिल्कुल भी ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं और अपराध हो रहे हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं सोचती हूँ ऐसे केस में अगर अपराधी उनके पास है और अगर वो ये कह रहा है कि मैंने नहीं किया है और लड़की कह रही है कि इसी ने किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पुलिस को चाहिए कि कुछ करे, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज कहीं भी कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। मैं सोचती हूँ कि इसको लेके और फिर पुलिस को बहुत सेंसिटिव होके ऐसी घटनाओं को देखना चाहिए। बट मैम वो चेंज तो हम देख ही नहीं रहे हैं। पुलिस का जो रवैया रहा है इस पूरे केस में, वो आके एक केस भी रजिस्टर नहीं करें। क्या एक्शन पुलिस की तरफ लेना चाहिए अभी? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस को बोले कि केस रजिस्टर करके, इसका मतलब गवर्नमेंट भी सेंसिटिव नहीं है ऐसे मामलों में। और मध्य प्रदेश का जिस तरह से ग्राफ ऊपर जा रहा है, मैं देखती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ करे। मैं अभी वहाँ टूर करके आई हूँ भोपाल में, और मैं देख रही हूँ लगातार इस तरह के केसेस हो रहे हैं। जो बेचारी सोशल वर्कर्स हैं वो बहुत काम कर रही हैं इस पे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है और पुलिस को उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आप ऐसा करें। मैं इस पे डीजी से बात करूंगी और ये केस दर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, केस दर्ज होना जरूरी है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आपको लगता है कि पुलिस पे किसी तरह से गवर्नमेंट का ही प्रेशर पड़ा है, वरना अभी तक ये मामला आगे बढ़ जाना चाहिए था? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे मामले में पुलिस को किसी की भी नहीं सुननी चाहिए और जरूर गवर्नमेंट के किसी जो भी वहाँ होगा उसका प्रेशर है और इसीलिए पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। हम इस केस को कल देख लेंगे, लेकिन मैम दूसरी बात जो सामने आई है इस केस में, the other thing we're picking up is that the family itself is being pressurized not to come forward and even register a complaint. So that pressure is obviously coming in from the police. मैं खुद कह रही हूँ कि केस रजिस्टर इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है
जो केस रजिस्टर नहीं होने दे रहा है, और उसके लोगों का हाथ है या उसका खुद का हाथ है। मैं सोचती हूँ पुलिस को सारी बातें छोड़ के सबसे पहले FIR लॉन्च करनी चाहिए। Mamta Sharma of the NCW, many thanks for having spoken to us here. Let's also get in Ranjana Kumari, who's now on the phone line with us. Ma'am, we keep talking about case after case that emerges of such magnitude. This time a girl who has been brutally raped, she has been burnt alive. And what we're talking about, the absolute unfortunate bit is that a case is not being registered. The police is simply not coming out and acting. Well, this is really shameful. This is ridiculous. Police has done it again. When such an incident happens, what should be the natural response of the police? We are still awaiting police sensitivity enough to be able to respond to such cases. This is absolutely unacceptable. What police is doing, I think the police chief of the district of the area should be suspended immediately for not having responded to such a serious. I mean, that would mean that a high and mighty can get away with anything. This is not acceptable at all. They should act immediately. The chief minister must take cognizance of this. Absolutely. Suspend the police officer and must, immediately register the case and provide all kinds of security. 80% burn. What kind of a country are we living in? State it is. This is not at all acceptable. We demand that chief minister must immediately suspend the police officer of the area and also make the police to act immediately. Well, that's the thing. We keep making our demands, but the thing is, who's going to act? Because it seems, Ranjana, at least in this particular case, the orders for the police not to act are coming from the topmost sources. Well, this is the whole thing that, there is somebody who's intervening in the case, somebody who's trying to protect the son of this, whosoever influential person it is. Everybody is citizen of India. Everybody is provided the same kind of constitutional protection. If there is any semblance of rule of law, then nobody should be spared. What kind of a messages are we giving every time girls have been brutalized, killed, burnt, and then these people want to, kind of shield the perpetrators of crime? This is really unheard of, the kind of behavior that every time we are encountering from our country's police. This is anybody who's listening, anybody who knows that this will not be unacceptable. We will be on the streets and we will really protest if the person is not immediately taken to task. And especially the local police people who are not... It's highly unfortunate, Ranjana. We just keep talking about cases like this and still, at the end of the day, no action that's been taken at any level. Ranjana, many thanks for having spoken to us here. We've got more breaking news, more developments coming forward on this story. Well, this is what we're breaking to you now. High-level sources are telling your channel that the Madhya Pradesh police is refusing to file a case of rape as Madhya Pradesh ranks first in the number of rape cases. Let's listen in to a police reaction. देखिए, जहाँ तक लड़की को जब ये अस्पताल में लेकर आए हैं और अस्पताल में जो सूचना दी है उसमें यही बताया गया है कि लड़की ने आग लगा ली है और वो इलाज के लिए लाए हैं। नंबर 2, जब उसका मृत्युपूर्व कथन लिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो उस मृत्युपूर्व कथन में लड़की ने बताया है कि उस लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया था जिससे ये हाथ छुड़ा करके भागकर आई थी और इस भय से कि उसकी बदनामी हो जाएगी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पर कहीं ना कहीं सर एक चीज तो है कि लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था, उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश भी यदि मान ली जाए तो कहीं ना कहीं लड़का एक पूरी तरह से दोषी अगर वो हाथ नहीं पकड़ा। निश्चित तौर पर लड़का दोषी है और लड़के ने उसका शीलभंग करने का प्रयास किया है, इसलिए लड़के के विरुद्ध हमने धारा 354A, 506, 341 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है। Well, those are the details emerging on this story. 14-year-old who was brutally raped. She was burnt alive and so far no case has been registered. Let's get in more from our correspondent who has been breaking down details on the story for us. You know what's very, very unfortunate at this point in time is what we're talking about is that this bizarre explanation that has come forward that a case is not going to be registered because it just so happens that Madhya Pradesh happens to top the list as far as crimes against women, rapes are concerned. Hello. Yeah, go ahead.
Yeah, I was telling you that actually so far as Mandsaur police is concerned, they have just registered the case against the accused youth under the section 354A and 506 and 341 of IPC, that is of molestation. But the victim girl is speaking before the media, and she is alleging that she has been raped and set on fire by the accused. And not only the girl, but even the teacher of the girl who actually reported to the police, and even the mother of the victim girl has also alleged that the girl has been raped, even though the police is not registering the case under section 376 of IPC, that is of rape. So it's very strange that why police is hesitating to register the case under section 376 of IPC, and why the police is not conducting the medical test of the victim yet, because in such a cases the police is used to conduct the medical test and ask the doctor to conduct the medical test so as to ascertain whether the allegation being made by the victim or the doubt should be get cleared as soon as possible. But here we have seen that Mandsaur police was quite quick to just respond that this was just a case of molestation, and they have registered the case under section 354A, 506 and 341, Right. and they were not in the position and not so serious that this is a very serious case, and Sure, Ashutosh. medical test should be conducted as soon as possible. Ashutosh, thank you for having joined us with the details that are coming forward on this breaking, highly unfortunate story that we're reporting on from Madhya Pradesh. Well, we'll continue to get you the very latest coming forward on this story, but right now we have to go in for a quick break here on the 6 p.m. when